Hello everyone, welcome to Commodities Podcast. This is Rakesh Khanna from Mirae Asset Sharekhan. Today we have an update on crude oil. Crude oil price movement indicate a clear bearish trend, marked by formation of lower highs, lower lows. The failure to surpass the resistance level at rupees 5,435, that is 20-day exponential moving average, reinforces the prevailing bearish sentiment in the market. This resistance level is crucial. Its inability to be breached suggests that the downward trend may persist. On the downside, the key support level at Rs 5,170 level is critical for the price action. A breach below this support could trigger further declines, with potential targets identified at Rs 5,018 and 4,730 level in near term. The negative crossover in the MACD supports the bearish momentum. Thank you. नमस्ते, मैं राकेश खन्ना मिरे एसेट शेरखान की तरफ से आप सबका कमोडिटी पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज जिस कमोडिटी की जानकारी देने जा रहा हूं वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की कीमतें आंदोलन एक स्पष्ट मंदी की प्रवृत्ति को इंगित करता है, जो निचले उच्च स्तर के निचले स्तर के गठन द्वारा चिह्नित है। 5,435 रुपीस, जो कि 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर प्रतिरोध स्तर को पार करने में विफलता बाजार में प्रचलित मंदी की भावना को पुष्टि करती है। यह प्रतिरोध स्तर महत्वपूर्ण है। इसका उल्लंघन करने में असमर्थता बताती है कि नीचे की ओर प्रवृत्ति बनी रह सकती है। नकारात्मक पक्ष पर 5,170 रुपये पर महत्वपूर्ण सपोर्ट मूल्य कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण है। इस समर्थन के नीचे एक उल्लंघन आगे की गिरावट को ट्रिगर कर सकता है, जिसमें संभावित लक्ष्य 5,018 और 4,730 रुपये में पहचाना जाता है। MACD इंडिकेटर ने नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है, जो कि बेरिश मोमेंटम के लिए सपोर्टिव है। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.